वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल एंड आई एम योर ट्रेनर दीपक। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज आइल्स राइटिंग टास्क टू essay writing. Yes, most of the students are facing a question mark or a kind of jerk when they heard about the writing task 2. कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज नथिंग बट मोस्ट सिंपल. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स चेक द एग्जांपल. आज हमारा जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. दैट मींस टू पार्ट क्वेश्चन. आइल्स में अगर राइटिंग में टू पार्ट क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे अटेम्प्ट किया जाता है और हमारी जो लाइक स्टेप्स है हाउ टू अचीव परफेक्ट देन 8+ तो कैसे लिया जाता है. देन व्हाइल with the help of live example, I am going to discuss the full essay. आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज a growing number of people feel that animals should not be exploited by people. पहला आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे कि some people और like a growing number of people, that is the subject. क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जब भी आइल्स में हमें क्वेश्चन मिले आपको रश नहीं करना है. डू नॉट रश टू अटेम्प्ट योर आंसर. पहले क्वेश्चन पढ़िए, बराबर समझिए, then attempt it. Okay, so that is a growing number of people feel that animals should not be exploited by people and they should have the same rights as humans. While तो ये था पहला कि feel that यहाँ से animals and they have the same right कि animals should not be exploited and they should have the same right as the human have. While others argue that human must employ animals to what to satisfy their various needs including uses for food and research. That is a second point of view, like argue that humans must employ the animal. We have to employ in the sense we have to use it. तो यहाँ पे टू पार्ट क्लियरली दिया गया है एंड वी हैव अ क्वेश्चन डिस्कस द बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो पहले 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लो, रिपीट एंड रिपीट के जब तक आपको कोई डाउट ना रहे कि नहीं. आप क्वेश्चन अपने आप से पूछे रहिए कि एम आई ऑन टॉपिक, जिसके आपका टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक आप क्वेश्चन पढ़ते रहिए. एंड देन द सेकंड स्टेप इज टू डेवलप योर आइडिया. इट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग. आपको क्या कि पहले एडवांस में ही आइडिया डेवलप कर लेने. ये जो ऐसे है अटेम्प्ट कैसे करना है हमें. So we're going to write about a 4 paragraph. The first paragraph is about a paraphrase. That means ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को हम अदर वर्ड्स में इन अदर वे रिप्रेजेंट करेंगे. आइडिया वुड रिमेन द सेम whereas we are going to change some form of sentences like from active to passive, direct to indirect और kind of subject change करेंगे. है तो डालेंगे, नहीं है तो like kind of we going to make some changes. पैराफ्रेजिंग इंपॉर्टेंट है तो पहला पैराग्राफ होगा पैराफ्रेजिंग. सेकंड बॉडी पैराग्राफ, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड पैरा एंड फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इज टू सपोर्ट द फर्स्ट व्यू पॉइंट कि वी शुड नॉट यूज एनिमल, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट एनिमल. ये पहला है. और दूसरा बॉडी पैराग्राफ होगा कि वी शुड यूज देम. तो दोनों को हम आर्ग्यूमेंटरी सपोर्ट करेंगे. ये पहला व्यू पॉइंट कि हमें क्यों यूज करना चाहिए एक पैराग्राफ में, हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए. एंड देन लास्ट वुड बी द कंक्लूजन, इंक्लूजन ऑफ आर ओपिनियन. हमारे ओपिनियन के साथ हमें हमारा ऐसे का कंक्लूजन लिखना है. सिंपल है, सिंपल मेथड से सीखेंगे विथ लाइक आप इसका एज ए फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो. तो पहले क्या करना है आपको, तो पहले आप आइडिया डेवलप कीजिए. आपको क्या ऐसे जस्टिफिएबल आइडिया है कि हम एनिमल्स को यूज करेंगे और ऐसे क्या आइडिया के वहां यूज करना नहीं चाहिए. जब भी आप आइडिया प्रिपेयर करो व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आपको याद ये रखना कि आपको IEE मेथड जो है, आइडिया एक्सप्लेनेशन विथ सपोर्टिव एग्जांपल, भूलना नहीं है. ये जो मेथड है IEE, आपको 2 बातों का खास याद रखना है. पहला तो आपको जो टास्क अटेम्प्ट या बैंड डिस्क्रिप्टर है वो तो सारे 6 ही
Additionally, you have to follow the PPF structure. ट्राई कीजिए कि आप पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर PPF स्ट्रक्चर को इसमें इंक्लूड कर पाए, ताकि वैरायटी ऑफ ग्रामेटिकल रेंज होगी। रेंज के साथ आप बैलेंस कीजिए एक्यूरेसी का, कि एक माइनर एरर भी आपके राइटिंग में होनी नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेसिक ग्रामर, टू बी फॉर्म, वर्ब फॉर्म एंड ऑल दैट। ओके, एंड देन आपको करना है दैट इज IEE, आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। मान लो कि ये जो पैराग्राफ है आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, उसकी 2 आइडिया होगी। लिखेंगे कैसे? पहली आइडिया देंगे विथ सपोर्टिव लिंकर, जो आपकी आइडिया है उसके रिलेटेड आपके लिंकर से आइडिया शुरू होगी, देन उसको एक्सप्लेन करेंगे विथ सपोर्टिव एग्जाम्पल। देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट आई एम गोइंग टू हेल्प यू राइट डाउन दी प्रॉपर पैराफ्रेज कैसे करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करना, एंड तक देखिए। एंड अभी तक आपने हमारी चैनल, यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। एंड लेट्स मूव टू द स्टेट ऑफ द पैराफ्रेज। द फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज द पैराफ्रेज, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जो कि आइल्स में सारे सभी पैराग्राफ का इक्वली इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन स्टार्टिंग लाइक ओपनिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट पार्ट फॉर ईच एंड एवरी राइटिंग और लिटरेचर। तो फॉर दैट रीजन दिस इज द पैराफ्रेज। कैसे किया जाता है? तो जो क्वेश्चन था हमने, वो क्वेश्चन की आइडिया है उसे सेम ही रख के उसे अदर वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है। फॉर दैट वे लाइक सम पीपल बिलीव दैट, वहां था सम वाइज मैन और लाइक कुछ भी लिखा हो, तो उसे यहाँ पे कन्वर्ट करके द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीकर इज सम पीपल बिलीव दैट, वहां आर्ग्यू था, आई चेंज इट विथ बिलीव दैट animal should be treated, we should treat animal, we should like animal should be exploited और ऐसे वर्ड थे। so animal should be treated, that is the passive, should plus be plus V3, so animal should be treated in the same way humans are, जैसे ह्यूमंस को ट्रीट किया जाता है ऐसे एनिमल को ट्रीट किया जाता है। तो सेम आइडिया है कि एनिमल्स शुड बी ट्रीटेड एज द सेम वे ह्यूमंस आर एंड हैव सिमिलर राइट एज द ह्यूमंस हैव, जैसे हमारे राइट से ऐसे ही एनिमल्स को होने चाहिए। वेयर ये पहला आर्ग्यूमेंट था कि एनिमल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे एज ह्यूमंस आर एंड दे शुड हैव अ सिमिलर राइट एज द ह्यूमंस हैव। Whereas on the other hand, in contrast, यहाँ पे ऐसे आप लिंकर्स डाल सकते हो। Whereas on the other hand, in contrast, on the other hand, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर whereas others think that, others argue that, others argue like the other people have their own argument, ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो। Like whereas others think that it is more important टू यूज धैम, एनिमल्स को एज लाइक हमारे जैसे ट्रीट करना, हमारे जैसे राइट देना, उससे बेटर है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यूज धैम एज वी डिजायर फॉर फूड एंड मेडिकल रिसर्च। क्योंकि व्हाई वी शुड यूज एनिमल्स, तो क्या के यहाँ पे कि वी शुड यूज देम फॉर फूड एंड मेडिकल रिसर्च, यहाँ पे दे शुड हैव और दे शुड बी ट्रीटेड एज द सेम rights or they should have the same way they are being treated as humans. So animals should be treated exactly the same way as humans are being treated and should have same rights. तो ये होगा हमारा बॉडी पैराग्राफ 1, तो इसके रिलेटेड ही हम आइडिया लिखेंगे। सेकंड यहाँ पे in contrast के other people argue that we should use them in for various purposes, so for food and for मेडिकल रिसर्च, तो हम ये बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखेंगे। दैट्स द रीजन आई टोल्ड यू कि जब भी आप आइल्स अटेम्प्ट करो, और आई वुड से आइल्स टास्क 2 राइट, ऐसे राइटिंग अटेम्प्ट करो, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस के आइडिया डेवलप कर लीजिए, तो उसका जो ग्रुपिंग है वो आप पैराफ्रेज में डाल सकोगे। लाइक मेन आइडिया और द थीम यू विल बी एबल टू एड इन योर पैराफ्रेज। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेम वे एज ह्यूमंस आर बीइंग ट्रीटेड एंड दे शुड आल्सो हैव द सेम राइट्स। तो ये जो वर्ड है इसी रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड हम आइडिया लिखेंगे। 2 आइडियाज एज आई टोल्ड यू, आइडिया, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल, और यहाँ पे फॉर द फूड एंड फॉर द मेडिकल रिसर्च, तो वही आइडिया को हम रिपीट करेंगे, आई मीन टू से इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होगा, इट विल बी अलाइन विद, दिस इज गोइंग टू बी अलाइन विद बॉडी पैरा फर्स्ट, जो फर्स्ट आइडिया है ये मैच होगा बॉडी पैरा फर्स्ट के साथ,
और ये जो है फॉर फूड एंड मेडिकल रिसर्च that is going to connect with the body para 2 straight away, which means we are maintaining CNC cohesion and coherency with has linkers and like whereas वो सब डालेंगे तो हमारा कोहेजिव डिवाइसेस तो हो जाएगा, लेकिन फॉर द कोहेरेंस ऐसे आपको मैच करना है। माइंड इट ऐसे आप लिखे तब जाके आपका कोहेरेंस है वो मैच होगा। पूरा ऐसे 4 of the paragraph or 5 of them would be matched or would be aligned with each and every paragraph, which will ends up to have a high band score in our cohesion and coherence CNC। तो ऐसे ही आप मैच करोगे। याद रखो जब भी आप आइडिया डेवलप करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तो उसके कुछ ग्रुपिंग वर्ड्स और द मेन थीम ऑफ योर आइडियाज यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको पॉइंट आउट कर दीजिए, विच आप यू गोइंग टू यूज देम दोज आइडिया, यू गोइंग टू एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ in your body paragraph first and second, which will maintain your CNC easily and you will get a good score definitely। अगेन सो फिर से लेट्स चेक द पैराफ्रेज क्या है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट ही लिखना है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है आइडिया में। या यू हैव टू मेंटेन द ग्रामर, रेंज, वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग, बट कीप योर आइडिया सिंपल। इन दैट वे सम पीपल बिलीव दैट animals should be treated v3 means के passive in the same way humans are and have similar right, whereas others think that it is more important to use them as we desire for, we need for, we long for। okay, desire for का यहाँ पे we can use as we long for। phrasal verbs कुछ लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो as we desire or long for food and medical research। this essay will discuss both point of the views। simple ऐसा ही लिखिए। so that is the paraphrase। now move to the body paragraph first with the first idea। Let's move to the body paragraph first। how to start the paragraph in the sense कि हम जब भी पैराग्राफ शुरू करेंगे हमारी मेन आइडिया जो है पैराग्राफ की वो पहले स्टेटमेंट में शुरुआत में हमें लिख देनी। हाउ, चेक हियर। with regards to the exploitation of animals means के इस पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, हमें एनिमल्स को यूज करना चाहिए, उसे सपोर्टिव आइडिया। सो विथ रिगार्ड्स टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनिमल्स people believe it is acceptable for several reasons। okay, we should use animals for many reasons। ये थे हमारी टैगलाइन और स्टार्टिंग लाइन। तो ये जो है पूरा पैराग्राफ क्या होगा तो इसी में होगा। सो इट विल फाइंड और रीडर विल फाइंड इट इजी। अनदर रीजन, ये जो यहाँ पे हमने पैराफ्रेज में लिखा था उसके साथ इस लाइन को हमने अलाइन किया, कनेक्ट किया। एंड these lines like with regards to the exploitation of animals people believe it is acceptable for many reasons। तो ये जो many reasons है, several reasons, तो यहाँ से हम several first and then second ऐसा लिखेंगे। linkers तो अलाइनमेंट हो गया, कनेक्टर एंड विथ लिंकर्स हमने क्या किया, CNC को परफेक्ट किया। तो कैसे आइडिया होगी, तो फर्स्टली दे थिंक दैट humans are the most important beings on the planet। क्यों हमें इंसानों को, एनिमल्स को क्यों यूज करना चाहिए, what are the reasons। so first is they think that, they believe that, they argue that, they consider that, those words can be used, that humans are the most important being। okay, are important beings तो क्या किया, the most important superlative degree, ऐसे क्या एक रेंज ऑफ ग्रामर भी आपको ऐड करनी है। so the most important beings on the planet and everything must be done to ensure human survival। must be done passive, everything must be done to ensure or to provide the surety for the survival of humans, or to ensure the human survival। okay, the idea explanation now if this means experimenting on animals so that we can fight and find cure for kind of variety of diseases, and this takes priority over animal suffering। प्राणी इंसानों को अगर कुछ क्योर मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगी तो एनिमल्स चाहे सफर करे, वी डोंट केयर, वी शुड कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनिमल्स। सो दैट इज द एग्जांपल। अगेन फुल पैराग्राफ, आई मीन टू से पार्ट 1। with regards to the exploitation of animal people believe it is acceptable for several reasons।
फर्स्टली टू स्टार्ट विथ, टू बिगिन विथ, आप यहाँ पे अपने लिंकर्स जो है ऐड कर सकते हो. इन लिंकर्स आर इम्पोर्टेंट. दे थिंक दैट humans are the most important beings on the planet and everything must be done to ensure human survival. If this means conditional clause डाल दिया यहाँ पे, conditional statement complex sentence बनाया कि if this means experimenting on animals so that we can fight and find cures for diseases, then this takes priority over animal suffering. So हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये थी idea first, now move to the idea second. Okay, same body पैरा first की second idea, क्योंकि first idea कह के मैं आपने देखा कि थोड़ी length हो गई थी. For idea explanation, like हमने starting किया, idea दी, explanation and example, तो second idea को मैंने short में present कर दिया. कैसे? फर्दरमोर, वहां पे हमने फर्स्ट लिंकर डाला था फर्स्टली, और आप डाल सकते हो टू स्टार्ट, टू बिगिन विथ. कैसे? एक आइडिया पूरी हुई हमारी, शुरू किया आइडिया, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, फुल स्टॉप हुआ. देन अगर दूसरी आइडिया जब हम शुरू करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विथ लॉजिकल लिंकर्स. तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि जो हमें वहां पे आइडिया थी दैट वाज टू सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट दैट वी शुड यूज एनिमल्स, तो वही आइडिया को मैं यहाँ एक्सटेंड कर रहा हूं. सो आई यूज द फर्दरमोर. सेम आइडिया कंटिन्यू हो रही है. सो फर्दरमोर, इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट, किसी को ऐसा लग रहा कि इट इज बिलीव्ड बाय सम दैट, तो क्या कर दिया, सम पीपल बिलीव दैट. लाइक सेंटेंस, लाइक मोस्टली हम लिखते हैं पैराग्राफ में, हमने शुरू में पहले आइडिया में ही लिखा सम पीपल बिलीव दैट, सम आर्ग्यू दैट, तो उसको क्या कर दिया मैंने, पैसिव डाल दिया, सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया. इट इज बिलीव्ड बाय. So it is believed by some that, और आप ये भी लिख सकते हो it is believed that, by some भी आप remove कर सकते हो. Okay, so variety of grammar range and pattern आएगी. So it is believed by some that animals do not feel pain or loss. Okay, animals को पेन फील नहीं होता, या फिर as humans do, हमें जैसे हम लॉस फील होता है, कोई हमारा मर गया चला गया तो पेन होता है, लॉस होता है, ऐसा एनिमल्स को फील होता नहीं. ऐसा some people believe that, so it is believed by some that animals do not feel pain or loss. तो ये जो है यहाँ पे टू नाउन्स है, we can use like complex pattern बना सकते हैं कि animals do not feel either pain or loss as humans, either और डाल सकते हैं. और यहाँ पे not only but also भी कर सकते हैं कि animals do not feel not only pain but also loss, ऐसे लाइक क्या क्या either और neither nor, like animals, ये जो है एनिमल डू नॉट, नेगेटिव है, उसको अगर एसेटिव करना भी सेम आइडिया, तो हो सकता है कि बाय सम दैट एनिमल्स फील नाइदर पेन नॉर लॉस एज ह्यूमंस डू. तो नाइदर नॉर भी यहां पर डाल सकते हैं, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है एज ह्यूमंस डू. सो if we have to kill animals for our food or other uses, for survival, for food, for medical research or anything, then this is morally acceptable. क्योंकि इंसान को पेन फील होता है, इंसान को लॉस फील होता है, लेकिन नॉट टू द एनिमल, ऐसे कई लोग बिलीव करते हैं. So for that reason, furthermore, it is believed by some that animals do not feel pain and loss as humans do. So if we have to kill animals for food and other uses, this is morally acceptable. This is the end of paragraph first, body paragraph first. Now let's move to the body paragraph second, paragraph 2. Okay, हमने body paragraph first के जो supportive idea थे वहां डाल दिए. अभी यहाँ क्या करना है, अपोज करना है कि we should not use animal, we should not exploit animal, or we should not harm the animal. कैसे, क्यों? So like however, पहले पैराग्राफ जो था हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, उससे क्या है, हमारी यहाँ पे जो आइडिया है वो कॉन्ट्रास्ट हो रही है. So I have used the contradictory linker, reverse linker. Okay, वहां से यहाँ हमने contrast दिखाना है. So that's why I've used however. तो यहाँ पे आप on the other hand, on the flip side, ऐसे यहाँ पे linkers use कर सकते हो to show the contrast. Okay, so however, I do not believe these arguments stand up to scrutiny. Okay, जो यहाँ पे हमने जो थी हमारी आइडिया, जो पर्सनल बिलीफ थी, क्योंकि हमें पर्सनल स्टैंड भी लेना है, like with your opinions है ना, discuss both views and give your opinion. So यहाँ लिख दिया I do not believe. Okay, like however or on the other hand, I do not believe these arguments stand up to scrutiny. आइडिया दे दी. अभी
मैं अपनी आइडिया यहाँ पे शुरू करूंगा। दैट्स रीजन मैंने यहाँ डाल दिया टू बिगिन, वहां पे था हमारा फर्स्टली, टू बिगिन, फर्स्टली, टू स्टार्ट, कोई भी आइडिया शुरू करने के जो बिगिनिंग्स ऑफ लिंकर्स यहाँ डाल सकते हैं। So to begin, it has been shown on numerous occasions, और it has been shown passive, और यहाँ पे डाल दिया variety of grammatical range. So it has been shown on numerous occasions by secret filming in laboratories via animal rights groups. Okay, तो यहाँ पे क्या के काइंड ऑफ सर्वे और काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट डाल दिया कि इट हैज बीन शोन ऑन न्यूमरस ओकेजन्स बाय सीक्रेट फिल्मिंग इन लैबोरेटरीज वाया एनिमल राइट ग्रुप्स। उन लोगों ने सीक्रेटली वहां पे फिल्म ले ली और क्लिप ले ली, और उन लोगों ने हमें दिखाया क्या, दैट एनिमल्स फील्स as much pain as humans, as क्या किया हमने, feels as much pain as humans do comparative degree. They suffer when they are kept in cages for a longer period of time, for long period or for a longer period of time. तो ये थी हमारी first idea explanation example again. However, I do not believe these arguments stand up to scrutiny. To begin और to begin with, to start with, आप ऐसे यहाँ पे starting के लिंकर डाल सकते हो. It has been shown on numerous occasions by secret filming in laboratories via animal rights groups that animals feel as much pain as humans do, and they suffer when they are kept in cages for long period. So that is the first idea. अभी move करते हैं second idea के, why we should not use the animals. सेकंड आइडिया, फर्स्ट आइडिया हमने लिखी, तो सेकंड आइडिया में क्या किया मैंने, लिंकर यूज कर दिया, इन एडिशन, एडिशनली, फर्दर मोर, मोर ओवर, टू एक्सप्लेन मोर, ऐसे यहाँ पे लिंकर्स आप एक आइडिया पूरी हो दूसरी में ऐड कीजिए. इन एडिशन, a substantial amount of animal research is done for cosmetics not to find cure for disease. हमने फर्स्ट बॉडी ग्राफ में लिखा था कि research on animal or cruelty on animal is mostly being done to find a cure, a permanent cure for kind of diseases for the well-being of a humankind. However, यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि जो रिसर्च हो रहे on animals are mostly done for the cause of cosmetics, not for the or not to find cure for diseases. Therefore, so this is unnecessary. वहां पे हमने मेडिकल का, अगर मेडिकल है somehow it is acceptable, but out of 100 experiment 98% of experiments are being conducted to or find a proper cosmetic for the beautification of humanity or mankind. So this is not necessary, it is unnecessary. Okay, so यहाँ पे क्या कर दिया, आइडिया डाल दिया, एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल के, इन एडिशन a substantial amount of animal research is done for cosmetic not to find cure for disease, therefore also this is unnecessary. एक आइडिया हमने शुरू की, यहाँ पे क्लोज कर दी, सो लिंक कर डाल दिया अनदर, फाइनली और इन द एंड, एट द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे यहाँ पे हम लिंकर्स डाल सकते हो. फाइनली इट हैज आल्सो बीन प्रूवन दैट, क्योंकि फूड के लिए भी था ना, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कंसीडरिंग टू हैव अ higher level of a protein or build a muscles, improve the stamina, rather than food, like rather than vegetables and fruit, nuts and all that, we have to focus on animal. ऐसे हमारे में लाइक है ना, बॉडी बिल्डिंग करो तो चिकन खाना चाहिए, बकरे खाए, ये वो तो मिलता है, लेकिन research is claiming that what, so finally it has been proven, क्योंकि आई बिलीव एंड ऑल दैट के क्या करिए, यहाँ पे जब भी आप लिखो इट हैज बीन प्रूवन, ऐसे क्या के जनरल स्टेटमेंट्स ऐड कीजिए. इट हैज बीन प्रूवन क्या, दैट humans can get all the nutrients and vitamins that they need from green vegetables and fruit. जो भी हम ऐसे बिलीव करते हैं कि एनिमल्स खाएंगे तभी, लाइक मीट खाएंगे, मटन खाएंगे तभी हमारे में स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर आएगा, नहीं. It can be gained by eating both vegetables and fruits easily. So it is proven, it has been proven that humans can get all the nutrients and vitamins that they need from green vegetables and fruits. Therefore, to end, again, having to kill animals for food is not an adequate argument. Okay?
फूड के लिए प्राणियों को मारना, एनिमल्स को मारना और उसे पनिश करना, इट इज नॉट एडिक्वेट आर्ग्यूमेंट. सो अगेन the last idea is that in addition, a substantial amount of animal research is done for cosmetic, not to find cure for disease. So or therefore this is unnecessary. Finally, it has also been proven that humans can get all the nutrients and vitamins that they need from green vegetables and fruits. Therefore, again, having to kill animals for food is not an adequate idea or argument. That was the body paragraph second. Now it is time to reach to the end part or closing part, conclusion of an essay. Okay, time for the conclusion. The last paragraph, again the important part. I would say सभी paragraph important ही है. So conclusion कैसे लिखेंगे? Conclusion में हमें क्या लिखा? एक paragraph में लिखा था कि like people are doing misuse of animal, they are doing a cruelty towards animal. लेकिन हमारा व्यू पॉइंट क्या था कि वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल. तो कंक्लूजन भी ऐसा ही हमें जो मीन्स के हमारा पूरा ऐसे जो है उसकी आइडिया क्या है, द फ्लो ऑफ आइडिया वी हैव टू मेंटेन, वी मस्ट मेंटेन इन द कंक्लूजन. एंड फॉर दैट रीजन आई स्टार्टेड विद टू सम अप इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड. ऐसे लाइक नॉर्मल कंक्लूसिव लिंकर्स ही यहाँ पे यूज होने हैं. So to sum up, although some people argue that हाँ माना कि हालांकि ऐसा है ना लगे दो although कि कुछ लोग मानते हैं लेकिन मैं नहीं. So दो although यहाँ पे हो सकता है. दो और although some people argue killing animals for research and food is ethical. कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं. I don't, क्योंकि हमने सपोर्ट क्या किया है to save the animals. So although some people argue killing animals for research and food is ethical, comma, I would argue, मैं पर्सनली क्या बिलीव करता हूं, I argue, I state there is sufficient evidence, okay, there is sufficient evidence to demonstrate that this is not the case. What is not the case? Killing animals for research and food. So that this is not the case, and therefore steps must be taken to improve the rights of animal. तो कुछ हमें ऐसे strong steps लेने जरूरी है. तो क्या था कि हमने जहां सपोर्ट किया और जहां अपोज किया कंक्लूजन में स्ट्रेट अवे हमने डाल दिया. इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नीट एंड क्लियर कंक्लूजन. कुछ ज्यादा अटपटा उटपटांग या फिर कंफ्यूजिव आइडिया नहीं डालना है, स्ट्रेट अवे ही दे देना है. जैसे कि टू सम अप, although some people argue killing animals for research and food is ethical, it is believed by some others. I would argue there is sufficient evidence to demonstrate that this is not the case. Like we should not use the animals for food, for the case like research and for the food. And therefore steps must be taken to improve the rights of animal. So friends, that was or that is the essay writing techniques, or I would say essay आप लिखेंगे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट, पूरा का पूरा ऐसे परफेक्टली एक बैलेंस फ्लो में लिखेंगे. अब जो भी बैंड डिस्क्रिप्टर है पूरे के पूरे चारों के चारों बैंड डिस्क्रिप्टर प्रॉपरली फॉलो करेंगे, रेंज ऑफ टेंसेस यूज करेंगे, पीपीएफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली IEE आइडिया एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे. आई गारंटी यू दैट यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. दैट इज माय श्योरिटी. एंड मोर ओवर इफ यू आर लुकिंग लाइक आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एंड यू वांट टू चेक योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड एग्जैक्टली, आपकी अभी प्रिपरेशन क्या है, आपकी एरर्स क्या है, व्हाट आर योर डाउट्स, व्हाट आर योर क्वेरीज. इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, drop your comments in below. I will get in touch with you personally. I will provide you the personal assessment for your speaking and writing, especially to help you find out your errors to work on, and will give you proper feedback that you will be able to achieve your desired best score in your first attempt. So thank you so much friends being with us. एंड अब तक आपने हमारी चैनल यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.